हरे कृष्णा। आप सबका हार्दिक स्वागत है इस्कॉन पंजाबी बाग यूट्यूब चैनल पर। इस्कॉन पंजाबी बाग यूट्यूब चैनल का पर्पस है कि हम हर रोज आपके सामने ला सके भगवान के सुंदर दर्शन, सुंदर कीर्तन, कृष्ण कथा, भजन और आने वाले नए उत्सव। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा। Srimad Bhagavatam 9th Canto Chapter 6 Text 55. श्रीमद् भागवतम स्कंद 9 अध्याय 6 और श्लोक संख्या 55। Tasvapatyur Maharaja Tasvapatyur Maharaja Nirikshyadhyatmikim gatim Nirikshyadhyatmikim gatim Amvayustat Prabhadvena Agnim Shantam Ivarchitasaha Agnim Shantam Ivarchisaha Tasvapatyar Maharaja Mirikshyadhyatmikim gatim Anviyos tat prabhavena Agnim Shantam Ivarshita Varshitaham Tasvapadyur Maharaja Nirikshyadhyatmikim gatim Anviyustat Prabhavena Agnim Shantam Ivarshita. Translation. O Maharaj Parikshit, by observing their husband progressing in spiritual existence, Subhadra Muni's wives were also able to enter the spiritual world by his spiritual power, just as the flames of a fire cease when the fire is extinguished. हे महाराजा परीक्षित, अपनी पत्नी को आध्यात्मिक जगत की ओर प्रगति करते देखकर सौभरी मुनि की पत्नियां भी मुनि की आध्यात्मिक शक्ति से वैकुंठ लोक में प्रवेश करने में समर्थ हुई, जिस तरह अग्नि बुझाने पर अग्नि की ज्वालाएं शमित हो जाती हैं। Purport by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. As stated in the Bhagavad-gita 9:32, Striyo Vaishyas Tata Sudras Tepi Yanti Param Gatim. तात्पर्य, जैसा कि भगवद गीता 9:32 में कहा गया है, स्त्रियों वैश्य तथा शूद्रों से आपे यांति पराम गतिम। Women are not considered very powerful in following spiritual principles, but if a woman is fortunate enough to get a suitable husband who is spiritually advanced, and if she always engages in his service, she also gets the same benefit as her husband. आध्यात्मिक नियमों का पालन करने में स्त्रियां पर्याप्त बलशाली नहीं मानी जाती, किंतु यदि कोई इतनी भाग्यशाली हो कि उसे ऐसा पति मिल जाए जो अध्यात्म विद्या में बड़ा चढ़ा हो, और यदि वह उसकी सेवा करती हो तो उसे भी अपने पति के समान लाभ मिलता है। Here it is clearly said that the wives of Subhadra Muni also entered the spiritual world by the influence of their husband. यहाँ पर स्पष्ट तौर से कहा गया है कि सौभरी मुनि की पत्नियां भी अपने पति के प्रभाव से वैकुंठ लोक में प्रवेश कर गईं। Listen carefully, please. कृपा करके ध्यानपूर्वक सुनिए। They were unfit, हालांकि वो अयोग्य थी, but because they were faithful followers of the husband, क्योंकि वो अपने पतियों की अच्छी अनुयायी थी, they also entered the spiritual world with him. Thus a woman should be a faithful servant of her husband.
इस तरह स्त्री को अपने पति की आज्ञाकारी दासी होना चाहिए। And if the husband is spiritually advanced, the woman will automatically get the opportunity to enter the spiritual world. और यदि पति आध्यात्मिकवादी हो तो स्त्री को भी वैकुंठ जाने का अवसर स्वयं एवं मिल जाएगा। Thus ends the Bhaktivedanta purports of the 9th canto, 6th chapter of the Srimad Bhagavatam entitled Downfall of Subari Muni. इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के अंतर्गत सौबरी मुनि का पतन नामक छठे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। So I don't know how carefully you've been listening, but this purport by Srila Prabhupada in terms of 2017 values is not politically correct. There are many persons in modern times now who would bitterly object to this purport. They would call it sexist. Why a man has to follow him? Why wife has to follow husband? Why? This is a modern question. Actually, the issue is a little complicated. The problem is that many of the modern husbands are full of nonsense also and deviate from pure dharma. This is a problem. So then sometimes the wife is more fixed up than the husband. So we're only 5,000 years into Kali Yuga, but already we're deep in the nescience. Everything's topsy-turvy, upside down. So if we just do a casual study of our own ISKCON movement, we'll see that sometimes in husband-wife combination over the decades, I mean, I've been in ISKCON for 50 years now, so I've seen it all, I've heard it all. And unfortunately, the majority of the marriages in ISKCON have also been topsy-turvy. So quite often, as a matter of fact, the wife may be more advanced than the husband. This becomes an issue. So the point here is obvious. The men have to be fixed in Krishna consciousness. If they are in householder life, they are supposed to be the Vartma Pradakshika Guru, or at least the, you could say, mini Acharya for the wife. It's supposed to be like that. Men in our movement have to come up to that standard. Not to say there aren't any that aren't on that standard. There are many rightly situated men in Krishna consciousness in our society. तो हम यहाँ पर ये चीज सीखते हैं कि कृष्णा भावनामृत आंदोलन में जो पति हैं, जो विवाहित जीवन गृहस्थ आश्रम में पति हैं, उनको आध्यात्मिक जीवन में स्थिर होना बहुत जरूरी है, उनको भक्ति में अग्रसर होना जरूरी है, तभी उनकी पत्नी उनका अनुगमन कर पाएंगे. But there are many men who are also not up to par, not up to speed in their example for the wife in devotional service. We're talking about devotional service here. We're not talking about the mundane situation. Let's not even think about the mundane situation right now. We're talking about devotees. तो हम भक्तों की बात कर रहे हैं, भौतिकवादी विवाहित भक्तों लोगों की बात नहीं कर रहे हैं. जो भक्त विवाह जो गृहस्थ आश्रम में हैं, उनके जो पति हैं, उनके लिए आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए अपनी पत्नियों के लिए. Because in the non-devotee world, everything's going to hell, high speed. क्योंकि भौतिक जगत में तो सब नर की तरफ तेजी से दौड़ रहे हैं. Men are cheating on their wives, they're beating their wife, all these kind of things going on. So in that type of situation, obviously how the wife can follow a husband if he's a rogue and a rascal, a drunkard,
all these things are going on in modern society. क्योंकि आधुनिक समाज में जो पति है वो अपनी पत्नी से धोखा करते हुए पाए जाते हैं या उनको मारते पीटते हैं, तो ऐसे व्यक्ति का अनुगमन पत्नी कैसे कर सकती है? उसको पता है उसका पत्नी जो है धूर्त व्यक्ति है, धोखेबाज है। So there are Deshakala Patra considerations. देश काल पात्र के नियमों का ध्यान रखना जरूरी होता है। It's the same in Hindi? Yes. So time, place and circumstance. देश काल पात्र की परिस्थितियों को देखना पड़ता है। In our society we've seen there have historically been and there still are some very advanced Vaishnavas. और हमने आंदोलन में भी देखा है कि कृष्ण भावना आंदोलन में कई ऐसे वैष्णवी हैं जो कि आध्यात्मिक जीवन में बहुत Answer, there are some advanced saintly men also. और उसी तरीके से कुछ उन्नत वैष्णव भी हमारे आंदोलन में हैं। So in Daivi Varnashram, because we're situated in Daivi Varnashram, that is spiritual Varnashram Dharma. हम देवी वर्णाश्रम में हमारा आंदोलन स्थित है जो कि आध्यात्मिक वर्णाश्रम है। The men must maintain a high standard of Krishna consciousness so that they can be worthy of being followed by the wife. We're not going to change the fact that the wife should follow the husband. We're not going to change that just because it's not politically correct now. तो कृष्ण भावनामृत आंदोलन में जो पति हैं उनको एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए अपनी पत्नियों के लिए, कैसे कि वो कृष्ण भक्ति में अच्छा स्तर को रखे अपने जीवन। In modern times, the most practical thing is the husband and wife are both Krishna conscious. आधुनिक समाज में सबसे अच्छा है कि पति और पत्नी दोनों कृष्ण भक्ति में लगे। And they share their realizations, they share their values. This is the proper grihastha life. और जो सही गृहस्थ आश्रम में है कि पति और पत्नी मिलकर उनके जो आध्यात्मिक साक्षात्कार हैं वो एक दूसरे से शेयर करें, एक दूसरे से बातचीत करें। You're supposed to be knowing there are two types of married lifestyles. मुझे उम्मीद है आपको पता होगा दो किस्म के विवाहित जीवन हैं, Grihastra and Grihameti. गृहस्थ और गृहमेधी। In Grihameti life, everything is topsy-turvy again. गृहमेधी में तो सब उल्टा सीधा है। Because Grihameti life, even if somebody is a devotee of Krishna, even if somebody is a member of our society, still, if their values and lifestyle are not up to speed, they also become or live as Grihameti. तो अगर ऐसा भी है कि पति पत्नी वो हमारे कृष्ण भावना आंदोलन से जुड़े हैं लेकिन जो आध्यात्मिक नियम है उनका सटीक रूप से पालन नहीं कर रहे, तो वो भी गृहमेधी का ही जीवन जी रहे हैं। Grihameti means householders, devotees. I'm talking about devotees now because we know that the non-devotees, you know, we're not just trying to sound excessively negative, but we're just telling the truth. तो मैं ज़्यादा नकारात्मक नहीं होना चाहता, लेकिन मैं सत्य कह रहा हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि ऐसे भक्त जो कि विवाहित जीवन में हैं लेकिन गृहस्थ आश्रम के पूर्ण नियमों का पालन नहीं करते। Because in 2017, the values chosen by modern married people are conducive to going to hell. They're conducive to going to hell. Their lifestyle, modern non-devotees, meat eating, drinking, smoking, all these things are going on in the non-devotee sector. और जो अभक्त का विवाहित जीवन देखेंगे तो वो मदिरा मांस खाते हैं, मदिरा पान करते हैं, अवैध संबंध रखते हैं, तो वो तो बहुत तेजी से नरक की तरफ जा रहे हैं। So the senses are not satisfied. The lust burns like fire, cannot be satisfied. और इसकी इंद्रियां कभी तुष्ट नहीं रहती और काम वासना और बढ़ती रहती है। Subari Muni had that problem. सबरी मुनि के साथ भी यही परेशानी थी। He saw the fish engaged in sex underwater and he became lusty. और उन्होंने जब दो मछलियों को मैथुन करते हुए देखा तो उनके अंदर भी कामों की इच्छाएं जागृत हो गई। You know, in so-called third world countries, people idealize the American way of life. और जो थोड़े से देश इतने आधुनिक समाज में इतने उन्नत नहीं हैं, जो कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, वो They have no idea what's really going on. उनका अनुकरण करते हैं। They have no idea what's really going on in the great United States of America. They have no clue. It's all fantasy. उनको ये उनकी जो वास्तविक स्थिति है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, उनको वो नहीं पता, लेकिन जो कल्पना बनाई गई है उनके सामने, उनको उसी के बारे में आभास है। Let me tell you a shocking truth. This will shock you.
एक मैं आपको हैरानीजनक एक खबर देता हूँ। At least I don't think India has come to this level yet. मुझे ये उम्मीद है कि भारत उस स्तर तक अभी तक नहीं गिरा। In the solid middle class of America, that means they have money, nice cars, nice house, good sense gratification, good jobs. Everything's fine by mundane standard. मैं बात कर रहा हूँ यूएसए में जो एक ऐसे परिवार की जिनका इंद्र तृप्ति की सारी सुविधाएं हैं, अच्छी गाड़ी है, अच्छा बंगला है, अच्छा धन है। But do you think they're satisfied? लेकिन आपको क्या लगता है क्या वो संतुष्ट हैं? No, they're not satisfied. Now this is what will shock you. और अब आपको ये हैरानीजनक बात लगेगी। In certain areas of America, there are private secret clubs. और ऐसे कुछ अमेरिका में ऐसे स्थान हैं जहाँ पर निजी क्लब हैं amongst the middle class Americans. It's not widespread, but I'm just giving you an example of what happens when the senses are out of control. और इतना ही प्रचलित नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे प्रांत हैं जहाँ पर ये चीज पाई जाती है। Private secret clubs of the middle class. और कुछ ऐसे गोपनीय निजी क्लब हैं ऐसे मिडिल क्लास परिवारों के। Like I say, it's not widespread, but it does exist. वो इतने प्रचलित नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से वो मौजूद हैं। They have nice houses. The average third world person would like salivate, salivate like a dog. Wow. Over the fancy, expensive homes that sell for $800,000 US. तो मैं उन परिवारों की बात कर रहा हूँ जिनके इतने सुंदर घर हैं कि अगर जो निम्न देश में से कोई व्यक्ति उस घर को देखेगा तो उसकी लाल टपक नहीं लगेगी। Neatly cut hedges out in front of the house in the suburbs. Suburbs means the surrounding areas of the city. They don't live in pigeonholes, like Prabhupada called pigeonholes. और ये जो घर है वहाँ पर बहुत सुंदर जो है बगीचा बना हुआ है और खुले इलाके में घर मौजूद होता है और शहर से थोड़ा दूर होता है और वो एक कबूतर खाने के जैसे घर नहीं। Pigeonholes means high-rise apartments. That's Prabhupada. So now in India, high-class life means pigeonholes. और भारत में एक ऊंचा जीवन का मतलब है ऐसी स्थान में रहना जो कि कबूतर खाने के समान। Living in Gurgaon, Faridabad, these places, affluent society, pigeonholes. और चाहे भौतिक रूप से तो बहुत ये अच्छी दृष्टि में देखा जाए लेकिन वास्तव में कबूतर खाने। No front yard, no garden, nothing. You're up in your high-rise apartment. What's the view? The slums next door. Excuse me, but where's the good life? Your view is the slums and the trash down below. Is that the good life? What do you think, sir, with the specs? He's saying no. No, it's not the good life. It's a tamagun life. Tamagun life can never be a good life. Don't download that. So, what these people are doing, they have money, they have nice houses, they have a 2-car garage. I mean, in India, nobody even has garages, everybody parks in the basement. But in America, they have this, 5-bedroom house, nice manicured front lawn, trimmed hedges. तो मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ जिनका 5 कमरे वाला घर है, गराज है जहाँ गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, आगे बहुत सुंदर तरीके से कटा हुआ बगीचा है और सब व्यवस्था पूरी है। 2-car private garage. There's no question of underground parking. 2-car private garage. और उनके पास अपना निजी गराज है जिसमें कम से कम 2 गाड़ियाँ खड़ी कर सकते हैं। Backyard also with garden, very nice. और पीछे जो है वहाँ पर भी एक सुंदर सा उनका बगीचा होगा अपना। Do you think they're satisfied? लेकिन आपको लगता है क्या भाई वो भी उनको संतुष्ट करता है? No, they're not. Now I'll tell you the shocking part. This is just a prologue.
This is just a prologue to the shocking part. और ये उस हैरानजनक वाली खबर की पहले वाली बात है. The shocking part is there are few private clubs where these middle class people secretly do husband-wife swapping. You heard me. और ऐसे गोपनीय क्लब में वो क्या करते हैं कि ऐसे जो मिडिल क्लास के परिवार हैं ये ऐसी जगहों में जाते हैं और जो पति पत्नी है वो दूसरे पति पत्नी के बीच में जो है वो वैध संबंध स्थापित. Secret private club where they have an agreement, nobody gets upset. They switch partners, so because their senses aren't satisfied with their husband or wife, they switch partners. They go have sex with some other person. Nobody gets upset. It's an agreement. तो एक ऐसा समझौता बना लेते हैं कि वो अपनी पति पत्नी को बदल लेते हैं और अवैध संबंध करते हैं और किसी को इस बात का बुरा नहीं लगता. Wife husband swapping. और पति पत्नी एक दूसरे के बदल लेते हैं. Just for quote fun unquote. और ये कुछ बस मौज मस्ती के लिए. Just now coming to India. और ये भारत में भी आ रहा है. No, India still has a stronger sense of dharma than that for the most part. But these things are creeping into India. Certainly they are. But still, India has much stronger dharma than America. Still. हालांकि ये चीजें भारत में भी आ रही हैं. भारत में फिर भी कुछ धर्म अभी भी बाकी है तो ये चीजें कम हैं. लेकिन ये आस्ते-आस्ते हमारे समाज में ये. But the dharma of India is being rapidly eroded by all kinds of sinful activities. लेकिन भारत में भी जो हमारे भारतीयों लोगों का जो धर्म है वो बड़ी जल्दी जो है वो खत्म होते जा रहा है. And trying to Americanize. और सब कुछ जो है वो पाश्चात्य जगत का. In the big cities, you go to the fancy malls. बड़े शहरों में बड़े-बड़े मॉलों में जाइए. Inside and outside, they are replicas of the malls in America, just the same. Ugly buildings. Big, a city within a city, the malls, and everything you want. You can buy whatever you want inside there if you got the money. They have the money because it's the affluent class. और यहाँ पर भी भारत में आप मॉल देखेंगे बड़े-बड़े मॉल बिल्कुल हूबहू वैसे ही जैसे आपको अमेरिका में पाए जाते हैं. बाहर जो है बदसूरत सी मकान उसके अंदर आप कुछ भी आप खरीद सकते हैं. आपको सभी चीजें प्राप्त होंगी अगर आपके पास पैसा है तो. So in Mumbai, not far from the temple, and in Chennai, other of the big cosmopolitan cities, there are areas of the cities when you're going down the street where you would swear. You people don't know exactly, but since I'm from the United States, it's just like going down a posh street shopping district in the United States. Nike shoe store, Levi's. Everything the same. They purposely imitating exactly the United States and certain areas of the city. तो आप मुंबई में जाइए, चेन्नई में जाइए, मंदिर से इतने दूर भी नहीं है, पास में आप देखेंगे कि वो ऐसे उन्होंने शॉपिंग मॉल बनाए हैं जहाँ पर जैसे अमेरिका में होता है कि वहाँ पर नाइकी का शोरूम, लिवाइस का शोरूम और ऐसे सुंदर-सुंदर वो दुकान होते हैं जैसे आपको अमेरिका में प्राप्त होता है. उसका वो नकल उतार रहे हैं. Devotees are supposed to leave all this behind. Devotees can have a nice car, there's no problem. You should have a good car that works well so that you can use it for going to Bhaktivedanta programs and festivals. तो भक्तों को ऐसी से बचना चाहिए, लेकिन भक्त लोग भी अच्छी गाड़ी रख सकते हैं और सुंदर व्यवस्था रख सकते हैं. किस लिए? ताकि वो गाड़ी का इस्तेमाल करें भक्ति विषय कार्यक्रम में जाने. Not for going to the cinema, Cineplex. So when these material things, we've got these cameras, high-tech, we've got laptop computers, we've got mobile phones. Of course, when Prabhupada was physically on the planet, these laptop computers and all had not been invented, mobile phones had not been invented. तो हम लोग भी आधुनिक यंत्रों का इस्तेमाल करते हैं जैसे ये कैमरा हो, मोबाइल फोन हो, कंप्यूटर हो. प्रभुपाद जी के समय ये सब चीजें तो नहीं थी. These things are a double-bladed sword. तो ये एक ऐसी तलवार के समान है जिसकी दोनों तरफ धारा है. A sword has blade on both sides. एक ऐसी तलवार जिसका धारा दोनों तरफ है. Now with this modern technology, it also facilitates sinful activity. क्योंकि इस यंत्रों से, आधुनिक यंत्रों से हम पाप कार्य भी कर सकते हैं. So, Dvipada Pashu, Dvipada Pashu?
और इसी कारण इंसान जो है दो पैर वाला पशु बन गया है। You know what is Dvipada Pashu? आपको पता है द्विपाद पशु का क्या अर्थ? Animal having two legs. Two-legged animal. Two-legged animals. Thank you very much. Haribol. They're not actually humans. They're not actually people. They're two-legged animals. तो मनुष्य जो है दो पैर वाला जानवर बन चुका है। They're utilizing the net not for looking at ISKCON festivals and Jagannath and Radha Krishna devotees. They use the net if they're not completely covered over by Tama and Raja. And Rajagun, as soon as you deviate from Acharya, then Tama, Raja, they're immediately. तो जो इंटरनेट है वो लोग जो है उसको भगवान के चित्र को दर्शन करने के लिए भगवान जगन्नाथ जी के लिए राधा कृष्ण या इस्कॉन के जो उत्सव है उनका देखने के लिए जगह उसको जो है दूसरे उद्देश्य से इसका इस्तेमाल करते हैं। और भक्त लोग भी जो रजो तमोगुण के अंतर्धीन हैं और रजो तमोगुण भक्त लोगों के ऊपर भी प्रभावशाली हो सकता है अगर वो आचार्य का जो रास्ता दिखाया हुआ रास्ता है उससे भटक जाए। So double-bladed sword. So nowadays the technology, especially in the young men, unfortunately, at IIT, big prestigious universities, what is the private lifestyle of these young men? तो ये जो आधुनिक यंत्र है आधुनिक विज्ञान है ये वो उस दोनों तरफ धारा वाले तलवार के समान है जिससे कोई सही और गलत दोनों चीजें कर सकता है। खासकर हम बड़े-बड़े विश्वविद्यालयों में देखते हैं जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कि ऐसे वहाँ के जो छात्र हैं उनका निजी जीवन देखेंगे तो बहुत ही निकृष्ट है। They're using the technology for viewing pornography. It's widespread. Even of the most educated young men, pornography viewing is very widespread. और आप इन आधुनिक बड़े-बड़े विश्वविद्यालयों में देखिए निजी छात्र हैं वो भी इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं पोर्नोग्राफी को देखने के लिए और ये बहुत ही इसका बहुत बड़ा प्रचलन है। Be very careful. Double-bladed sword. तो बहुत ध्यानपूर्वक आप इन चीजों का इस्तेमाल करें। Technology must be utilized in Krishna service. If technology is not utilized in Krishna service, then it is like drinking poison. अगर हम इस विज्ञान को भगवान कृष्ण की सेवा में नहीं लगाएं तो वो जो है So men must set example. In a married couple, men must set example for the wife. तो यहाँ पर हमें उदाहरण मिलता है कि जो पति हैं उनको अपनी पत्नियों के लिए आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। So marriage is supposed to be on the safer side. If the man and women are both Krishna conscious, then it's said to be on the safer side. It's supposed to be जीवन ऐसा ग्रस्त जीवन जिसमें पति और पत्नी दोनों भक्त हैं तो ऐसा विवाहित जीवन बहुत सुरक्षित है। So here Prabhupada is saying the wife should always be engaged in the service of the husband. यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं जो पत्नी है उसको अपने पति की आज्ञाकारी दासी होना चाहिए। Then she gets the same benefit as her husband. उनको भी वही आध्यात्मिक फल मिलेगा जैसे उनको पति को मिला। See, the point is the husband is supposed to be fixed in Krishna consciousness. The husband is supposed to set example for the wife. We've discussed as if the husband is deviating, then the wife will just be confused, depressed, etc. And she can't become Krishna conscious unless her husband is fixed in Krishna consciousness. तो पति को जो है वो कृष्ण भक्ति में दृढ़ होना चाहिए तभी वो पत्नी के लिए उदाहरण प्रस्तुत करेगा। अगर वो ऐसा नहीं है तो पत्नी भी जो है वो भ्रमित रहेगी और उदास रहेगी और उसको सही और गलत का सही रास्ता नहीं पता चलेगा। I'll take that back. Actually, the wife can be Krishna conscious even if her husband is full of nonsense. पीछे कहा था कि अगर पति कृष्ण भक्ति में नहीं जुड़े हुए तो पत्नी के लिए कृष्ण भक्ति करना असंभव है लेकिन आज कह रहे मैं वाक्य वापस लेता हूँ। For Vaishnavi, that's पत्नी जो है कृष्ण भक्ति में हो सकती है। For Vaishnavi, that's major tapasya. If the wife is more fixed in Krishna consciousness than the husband, then that's severe tapasya for her. She doesn't have to go to Himalayas and stand in ice cold water. Just having, if she is Krishna conscious and chaste, but her husband is full of nonsense, that's more austerity than standing in ice cold water in the Himalayas. तो अगर पत्नी कृष्ण भावना भावित है और पति नहीं है तो पत्नी के लिए बहुत बड़ा तपस्या है। ये तपस्या हिमालय में एक बर्फीले पानी में खड़े होने से भी ज्यादा है। Now I'll give you an interesting example. मैं आपको एक ऐसा उदाहरण देता हूँ।
This was a long time ago. Prabhupada was on the planet physically. कई सालों की बात है, श्रील प्रभुपाद जी जो है वो अभी भी There was a married couple. The wife was very chaste. और ऐसे कोई दो गृहस्थ भक्त थे और जो पत्नी थी वो एक सती सावित्री थी. She was fixed in Krishna consciousness. और कृष्ण भक्ति में भी दृढ़ थी. In fact, I think she's still a devotee. और अभी भी वो एक भक्त हैं. But her husband had no control of her senses, of his senses. और जो उनके पति थे उनके इंद्रियों उनके संयम में नहीं थे. He completely fell down. और उनका पतन हो गया. He was having affairs with other women. और उनका अवैध संबंध दूसरी औरतों से भी था. Intoxication. और वो नशा करते थे. So he had fallen into the cesspool of sinful activity, although he was initiated by Prabhupada. हालांकि वे दीक्षित भक्त थे, लेकिन वो जो है इंद्रियों को वश में ना करते जो है उनका उसमें डूब गए. Yet his wife was so chaste, she never left him. और हालांकि उनकी पत्नी इतनी सती थी कि उन्होंने अपने पति को. This is a tough standard to keep, but that's real chastity. She didn't leave her husband even though he was degraded. और वास्तव रूप में बहुत बड़ी तपस्या थी कि उनको पता था कि पति जो है उनका पतन हो चुका है, लेकिन फिर भी उन्होंने पति को त्यागा नहीं. So this was a reverse situation. और ये उल्टी परिस्थिति है. Then he got terminal cancer. और पति को कैंसर हो गया. In America, cancer is very common. Even devotees we see are getting cancer. और अमेरिका में कैंसर जो है वो बहुत ही कॉमन है. भक्तों को भी ये बीमारी बड़ी जल्दी से लग जाती है. So he was in intensive care in the hospital. और वो अस्पताल में ICU में थे. He was in a coma. और वो कोमा में थे. Coma means loss of consciousness. कोमा मतलब जिसमें उनकी भारी चेतना जो है वो. His eyes are closed and he was out of it, not conscious. भारी चेतना से जो है वो. I mean, you know, you couldn't talk to him, that kind of thing, you know. बात नहीं कर सकते थे या वो बात नहीं कर सकते थे. So, because he was in a coma for a long time, actually. Maybe it was an auto accident, I don't recall. But he was trauma, in any event, trauma. So, because he was in a coma for a long time, the devotees asked Srila Prabhupada, what is a coma? What's going on? क्योंकि वो कोमा में थे तो भक्तों ने श्रील प्रभुपाद से पूछा कि कोमा में एक मरीज कैसा अनुभव कर रहा होता है. Well, Srila Prabhupada said, at least in the case of this devotee, because he's a devotee, that complicates things in terms of the laws of karma and the interactions of the modes of nature and the will of the Lord. It becomes more complex because the modes of nature are mixed with the will of the Lord, you see. It's not just a generic situation. तो ये एक साधारण स्थिति नहीं थी, क्योंकि वो भक्त थे, तो भक्त होने के कारण जो कर्म था और भगवान की इच्छा थी वो आपस में कुछ उलझी हुई थी, क्योंकि कर्म पूर्ण रूप से काम नहीं कर सकता था, क्योंकि वो भक्त होने के कारण भगवान की इच्छा से भी वो रुक रहा था. So in this case, Srila Prabhupada said that higher authorities, meaning the devas, combined with the Supreme Personality of Godhead, they were trying to decide what to do with this man. तो प्रभुपाद जी ने कहा वास्तव में इस जीव के लिए जो ऊंचे अधिकारी हैं और जो देवतागण हैं और भगवान जो हैं वो ये निर्णय करने का प्रयास कर रहे थे कि इस जीव के साथ क्या किया जाए, क्या निर्णय लिया जाए. He had been engaged in very sinful activity, although he was a devotee initiated by Prabhupada. हालांकि वो एक दीक्षित भक्त थे प्रभुपाद जी के द्वारा, लेकिन क्योंकि वो पाप में कार्यों में लिप्त थे. But why higher authority was deliberating what to do? Why? I mean, the man was sinful, so obviously he's going to go down. तो हालांकि वो एक पापी व्यक्ति थे, तो उनको नीचे रूप से निकृष्ट योगियों में जाना था, लेकिन क्यों जो देवतागण हैं वो ये निर्णय नहीं ले पा रहे थे या सोच रहे थे, इसके विचार कर रहे थे इसके विषय. In this case, the principle was the opposite of what's being stated here. और यहाँ पर जो नियम है वो बिल्कुल उल्टा है जो कि इस प्रसंग में हम पढ़ते हैं. In this case, because of the extreme chastity of the wife, because she was spiritually rightly situated with sadhana, and she did not leave her husband even though he had become degraded, very degraded, she was exceptionally chaste.
और यहाँ पर एक विशेष चीज ये थी कि उनकी पत्नी जो है वो एक सती थी और उनकी सतीत्व के कारण जो है वो नीचे नहीं जा रहे थे. Therefore, the mix was more complicated. इसलिए परिस्थिति जो है वो बड़ी गंभीर हो गई थी और पेचीदा हो गई थी. Srila Prabhupada said higher authorities were trying to decide what to do with him. और I mean, he was going to die, but what to do with him, so he was on hold. तो ऐसे जीव को रोका हुआ था क्योंकि निर्णय लिया जा रहा था कि क्या होगा इस जीव के साथ. What's your name, Prabhu? Amrinder. Amrita? Amrinder. Amarendra? Amarendra. All right. Supposing you're a deva. तो एक भक्त जो है वो समझ लीजिए Supposing Duruka is a deva, जो है वो जीव है. and I'm a deva also. मैं भी वो एक देवता हूँ. We have a conversation about Amarendra, और हमारे बीच में संवाद चल रहा है अमरिंदर के बारे में. who fell down, became very sinful, क्योंकि वो पाप में कार्य में लगने के कारण जो है but has a very, very chaste wife performing austerity, extreme austerity, और उनकी एक सती पत्नी है and pure sadhana. जिनकी बड़ी अच्छी साधना है. So you know, devas are on a different time system. You know that. और जो देवता हैं वो ऊंचे लोगों में हैं तो वहाँ पर काल की परिस्थिति अलग है. They're not on the same time system as us. और उनका ऐसा परिस्थिति जो समय है वो वैसा नहीं. Much longer time system. तो उनका समय जो है हम यहाँ से Like a day of Brahma. कहीं गुना जाता है. A day of Brahma is nothing like our day. It's vastly longer. तो उनका दिन हमारे दिन से कहीं गुना लंबा है. So, me and Duruka are devas. तो मैं और दारू कृष्ण को And देवता है और अमरिंदर जो है वो Amarendra fell down. This is Amarendra Das. अमरिंदर दास का पतन हो गया है. I have a god brother named Amarendra also. This is not the same Amarendra. मेरा गुरु भाई भी है अमरिंदर करके लेकिन वो अमरिंदर वो व्यक्ति नहीं. So devas have a conversation. So we're talking about Amarendra Das here. तो देवताओं के बीच में बात चल रही है अमरिंदर के लिए, अमरिंदर दास के लिए. Well, Durga, what should we do with this guy? Because he served Srila Prabhupada, he followed Prabhupada for a small time, he shall be delivered. He follows Srila Prabhupada. Yes. For a small time, he shall be delivered, that's right. For some time he followed. Yes. He followed Srila Prabhupada. He followed a Mahabhagavad Nityasiddha devotee for some time. So, you think he should have leniency? Is that what you're saying? Yes, ma'am. तो एक देवता दूसरे देवता से बात करे यार बताओ यार इस जीव का क्या किया जाए. दूसरे देवता कहने लगे कि इन्होंने जो है एक शुद्ध भान की शुद्ध भक्त की सेवा की है, श्रीला प्रभुपाद जी की सेवा की है. तो दूसरे देवता कहने लगे हाँ वो तो भगवान के नित्य परिकर हैं, अध्यात्म जगत से हैं, हाँ थोड़ी देर की सेवा की है, फिर क्या किया जाए. But Duruka, he's been fornicating and he's, you know, several different women and smoking ganja again. I mean... So, I mean, we can't just go so easy on this guy. But his wife is so chaste. Oh. तो फिर देवता कहने लगे कि दूसरे देवता से अरे क्या किया जाए, लेकिन वो दोबारा से गांजा पी रहा है और वैर संबंध कर रहा है और नशा कर रहा है, तो अब क्या किया जाए. तो दूसरे ने कहा लेकिन उसकी पत्नी जो है वो बहुत सती है, तो वो उसको पतन करने से रोक रही है. Durga, you've got a good point. His wife is exceptionally chaste. You're right. So we'll have to give some special consideration, even though he's been so sinful, but because his wife is extraordinarily chaste, we have to give some special consideration here. तो फिर एक देवता फिर दूसरे देवता कहने लगे कि ये बात तो सही है क्योंकि उसकी पत्नी जो है वो सती सावित्री है, तो हमें निश्चित रूप से कुछ अलग सोचना पड़ेगा उसके लिए. Well, this is a short conversation. You see, this was not a long conversation. Upon Devaloka, a short conversation. देवलोकों में छोटा सा संवाद हुआ दो देवताओं के बीच में. In the meantime, down on the earth planet, several months have gone by while he's lying. This is the way the time works. Several months have gone by, he's lying there in a coma. Well, we're just talking about what should we do with this guy. और
जब तक देवताओं के बीच में बातचीत चल रही थी, पृथ्वी लोकों में कई महीने गुजर गए और वो जीव अभी भी कोमा में, उनके ऊपर निर्णय लिया जा रहा है. So the idea is that actually both the husband and wife should be Krishna conscious. But Maharaj, what happened? What's significant that if the husband is fixed in Krishna consciousness, then the wife gets equal benefit. So this is a huge. But Maharaj, what happened? What was the decision? Was the man saved or he died? Well, the conclusion of that story, I don't recall hearing that Srila Prabhupada said where that soul went. I don't recall. I can't honestly tell you that I know. I don't know when he left his body, but I don't recall hearing. When some Prabhupada disciples know this story, so if they come here to Punjabi Bagh, tell them the short version of the story, and ask them if they know what happened. I can't tell you where the soul went, and I don't know if they asked Prabhupada when he died. So वो उस जीव ने प्राण तो त्याग दिए, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि कौन से लोक में गया. तो प्रभुपाद जी कुछ शिष्यों को इसके बारे में कहानी पता तो उनसे पूछ सकते. But we see that just in our own yatra here, we see, and in our own movement, we see how some children and devotee families are born in a wealthy family. तो अपनी यात्रा में भी देखते हैं हमारे इस कृष्ण आंदोलन में कि कई भक्तों के परिवार में ऐसे बच्चों का जन्म होता है जो कि भक्त परिवार में जन्म हुआ है और बहुत रूप से of devotees, family of devotees, not non-devotees. और ऐसे बच्चे जो कि भक्ति परिवार में जन्म लेते हैं. But sometimes a child in a wealthy family of devotees may be physically deformed. हमने ऐसे भी देखा अपने आंदोलन में कि ऐसे भक्तों के परिवार में बच्चों ने जन्म लिया है जो कि भौतिक रूप से और भक्ति भी कर रहे हैं, लेकिन जो बच्चे का जन्म हुआ वो व्यवहारिक रूप से जो है they might show the signs even from childhood of severe health problems. So we see practically sometimes a child doesn't have normal health and may have years of severe health problem. और छोटे से बच्चे का जन्म हुआ है लेकिन उसको बहुत ही गंभीर बीमारी लग जाती है, लगी हुई होती है. तो देखते हैं भक्तों के This is a clear sign of mixed karma. और ये बहुत ही साफ से रूप से हमें पता चलता है कि बुरे कर्म का नतीजा है. Because of pious activities and prior devotional service, they qualified to take birth in a family of devotees. हालांकि उनके कुछ पुण्यों के कारण, कुछ भक्ति के कारण उनका जन्म भक्त के परिवार में हुआ. But they took a hit because of prior sinful activity. लेकिन उनके साथ ऐसे बीमारी स्थिति उनको प्राप्त हुई क्योंकि उनका कुछ This is science. अपना जीवन था. ये एक ऐसा विज्ञान है. So when a devotee is mixed and their path of devotional service mixed with sinful activities, fruitive activities, etc., then it's actually a high-risk program. Because you don't know exactly where you're going to end up or what condition you're going to end up in. Even if you come back as a devotee, even if you come back in a family with money. तो भक्तों को इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए कि अगर वो भक्ति में लगे हैं लेकिन उनका व्यवहार ठीक नहीं है या उनका कार्य ठीक नहीं है तो उनके आगे कैसे उनका कैसे कर्तव्य होगा वो बताना मुश्किल है. हो सकता है उनका जन्म अच्छा परिवार में हो सके, भक्ति परिवार में हो सके, लेकिन उनको अपना कर्म भोगना पड़े. So here the burden is on the husband. The husband should be fixed in pure Krishna consciousness. यहाँ पर जो उदाहरण है वो ये बताया गया है कि जो पति है गृहस्थ विवाहित जीवन में उसको कृष्ण भक्ति में स्थिर होना चाहिए, पक्का होना चाहिए. So here it's very important that Prabhupada is saying the wives of Subari Muni were unfit. In other words, they weren't pure devotees. यहाँ पर बताया गया है जो सौबरी मुनि की पत्नियां थी वो अयोग्य थी क्योंकि वो कृष्ण भक्ति में नहीं थी. But because they were faithful followers of their husband, they also entered the spiritual world with him on the power of his devotional service.
लेकिन क्योंकि वो पत्नी अपने पति की एक श्रद्धावान अनुयायी थी, उनके पति के भक्ति के कारण, साधना के कारण वो भी वैकुंठ लोक में प्रविष्ट हुए। But even though my god brother who died, maybe it was a car accident, maybe it was in a coma because of a car accident, he's too sinful, he couldn't have gone back. Even though his wife was very chaste, still he couldn't have gone back to Godhead. He must have taken his next birth in some, who knows, some situation where he had to get the sinful reactions from his fall down. तो ऐसे जो मैं गुरु भाई की बात कर रहा था, जो कि गोवा में चले गए थे शायद एक गाड़ी की दुर्घटना के कारण, तो वो निश्चित रूप से, हालांकि उनकी पत्नी एक सती थी, लेकिन क्योंकि वो उनका पतन हो गया, निश्चित रूप से वो भगवत धाम तो वापस नहीं गए, दोबारा जन्म हुआ होगा, लेकिन एक ऐसे परिवार में हुआ होगा जिसमें उनको भक्ति का अनुकूल स्थिति में, परिस्थिति में। Srila Prabhupada's books are for 10,000 years. So he has to write about the proper standards, and the proper standards is that the husband should be properly situated in strong Krishna consciousness. And if the husband is spiritually advanced, the woman will automatically get the opportunity to enter the spiritual world. So, in modern times we see the best thing is both husband and wife should both be Krishna conscious. There are many situations nowadays where the wife has a husband that's non-vegetarian, even devotees. A wife has a husband who's not even vegetarian. Sometimes he drinks liquor. She doesn't allow the husband to eat meat at home, but he goes out to Karma restaurant, eats non-veg. Actually, these things are going. I have personal experience talking with such Vaishnavas like that. It's not widespread, but it's going on. तो मैंने देखा है हमारे आंदोलन में ऐसे कई परिवार हैं जिसमें पत्नी भक्त हैं, लेकिन जो उनके पति हैं वो मांसाहार करने वाले हैं। वो घर में तो मांस नहीं खाने देती हैं, लेकिन बाहर जाकर वो एक कार्मिक एक रेस्टोरेंट में जाके मांस खाते हैं, मदिरा पान करते हैं। In that case, the husband will certainly get benefit from the chastity of his wife and the devotion of his wife. He'll certainly get benefit from her devotional service. So it'll be the opposite. So it depends on the circumstance. ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से पति को जो है वो पत्नी की भक्ति का, उनकी सती सावित्री होने का फल जरूर प्राप्त होगा, जो कि उल्टी परिस्थिति है जो कि यहाँ पर इस चीज का वर्णन किया गया है। Any questions, comments? इससे कोई प्रश्न है, कोई टिप्पणी है? Yes, Prabhu. Speak loudly into the mic, please. Thank you, Maharaj. मैं ये पूछ रहा था कि जैसे जो पत्नी है वो जो हस्बैंड है उसका जो हस्बैंड है वो पत्नी का गुरु माना जाता है शास्त्रों के हिसाब से। तो जैसे कोई गुरु है और उसका कोई फॉल डाउन हो गया तो शिष्य जो होता है उसको त्यागना चाहिए शास्त्रों के हिसाब से। तो What's the short version? पूरा कर लो। तो ऐसे जब वो किसी का फॉल डाउन हो गया तो उस वाइफ ने उसको मतलब त्याग देना चाहिए, मतलब शास्त्र के हिसाब से गुरु में शिष्य उसको त्याग देता है, तो पत्नी ने फिर उसको फॉलो क्यों किया? दूसरा पहला तो ये था, दूसरे की और जब कोई गुरु फॉल डाउन, What's the short version? Let him complete. जब गुरु का फॉल डाउन हो गया तो जो शिष्य है तो अगर वो भक्ति कर रहा है सेपरेटली तो उसका बेनिफिट फॉल डाउन गुरु को कैसे मिल गया? जैसे कि मतलब उसमें उस टाइम तो, और दूसरा कि कमल लोचन को आए थे तो उन्होंने कहा था कि पति अगर गलत करेगा तो उसको मिलेगा उसको फल, लेकिन अगर पत्नी गलत करेगी तो पति को मिलेगा, लेकिन पत्नी अच्छा करेगी तो उसको नहीं मिलेगा। तो ऐसे Prabhu, you're going to give me the short version of his question.
So Maharaj, he is saying that in our Vedic scriptures it is said that the husband is supposed to be the guru of the wife. Yes, the husband is supposed to be guru of the wife. That's correct. So that means he has to be Krishna conscious. So his question is that if we read in scriptures, if the guru falls down, the disciple is supposed to change the spiritual master or to leave the spiritual master, his association. But in the case of the example that you gave, the wife should have left the husband, the fallen down husband. In the case, just like we hear that the disciple should leave the fallen spiritual master, and for a wife, the husband is the spiritual master, so and the husband had fallen down, so the wife should have left it. Give the mic. Get the mic, because this is important. Oh, you got the mic. Okay. And translate his question, short version. Yes. I understand. There are 3 questions, Maharaj. Okay, I got to take them one. I got to take them one at a time. So Hindi. He spoke in Hindi only, so they know the. No, Hindi. Come on, for everybody else, Hindi question, short version. तो प्रभु जी का प्रश्न ये था कि जैसे हमारे वैदिक शास्त्रों में से कहा गया है कि पत्नी के लिए पति गुरु होता है, और ये भी कहा गया है कि गुरु का पतन हो जाए तो शिष्य को गुरु का सानिध्य छोड़ देना चाहिए. तो अगर हम इस चीज को समझते हैं तो पत्नी को पतित हुए पति को छोड़ देना चाहिए था, लेकिन जो महाराज ने उदाहरण दिया अपने गुरु भाई का कि पत्नी जो है वो पति की फिर भी सेवा करती रहे, तो हम इस चीज को कैसे समझें? The first point is that he's stating an absolute that if the guru falls down, the disciple should leave the guru. तो भक्त जो बात कर रहे हैं वो एक एब्सोल्यूट चीज के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर गुरु का पतन हो जाए तो शिष्य गुरु को छोड़ देना चाहिए. But in our own ISKCON society, the GBC was confronted with this several times over back in the 1980s. तो ऐसा प्रश्न जीबीसी को कई बार सामना करना पड़ा, खासकर 1980 के दशक में. So they have what's called the Shastra Research Committee, तो एक शास्त्र रिसर्च कमेटी बनाई गई who advises them on proper siddhanta. और जो जीबीसी को सही सिद्धांत के बारे में बताती है, अवगत कराती है. What the research committee found was that the Shastra says that first of all, if the guru is in that kind of difficulty spiritually and is not playing the role of Acharya, और उस कमेटी ने जीबीसी को ये बताया कि ऐसी परिस्थिति में जब गुरु अगर सही नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं या आचार्य की स्थिति का पालन नहीं कर रहे हैं, then the disciple should attempt with love and affection and tolerance, etc., to assist in reforming the guru from their fall down. This is what the Shastra concluded from the GBC Research Committee. They didn't say leave immediately. They didn't say that. तो शास्त्र रिसर्च कमेटी ने ये निष्कर्ष निकाला, शास्त्रों से पढ़कर ये निर्णय निकाला कि अगर ऐसी स्थिति है तो शिष्य को गुरु की सेवा करके प्रेम से स्नेह से उनको वापस मदद करनी चाहिए सही नियमों का पालन करने के लिए, उनको तुरंत छोड़ नहीं देना चाहिए. Then with time, if the efforts of the disciples in reforming or assisting the guru in rectifying, if those efforts by sincere disciples are unsuccessful, then they have to leave. You see, it's not immediate, you understand? That was the conclusion that GBC Research came to. और शिष्य को प्रयास करते रहना चाहिए निरंतर अपने गुरु की सेवा करने के लिए, मदद करने के लिए, और कई बार प्रयास करने के बाद अगर गुरु जो है फिर से सही आदर्श उदाहरण प्रस्तुत नहीं करते और फिर पतित अवस्था में रहते हैं, तब उनको उसको त्याग देना चाहिए. Now what's the second question? So second question was that just like in this example, if the disciple, if the guru falls down and the disciple is doing devotional service, the guru does not benefit from the devotional service of the disciple. But in this case, you were saying that the husband benefited from the devotional service of the wife. How do we understand that? Who says the guru doesn't benefit from the devotional service of the disciple? Who says? तो किसने ऐसा कहा है कि गुरु को अपने शिष्यों के भक्ति का फल नहीं मिलता है? It's not a fact. The guru does benefit from the devotional service. नहीं, same example से ना पूछा. The guru does benefit from the devotional service of disciples, certainly. वो तीसरा क्वेश्चन है. So निश्चित रूप से गुरु को
को फल मिलता है अपने शिष्यों की भक्ति का। But if the fall down of the guru is very severe, the sincerity of the disciples may not be enough to reform the fallen guru. It's not automatic. Can you repeat? Huh? I didn't get you. Can you repeat? Even if the disciples are sincere in trying to reform the guru, nevertheless, they may not be able to do so, and then at that point they have to go with another guru by siksha. They don't necessarily have to take reinitiation. The conclusion is they do not necessarily have to take diksha again. That's discretional by the guru and the disciples. तो अगर शिष्यों के प्रयास करने के बाद भी अगर गुरु वो दूसरे गुरु से शिक्षा लेना चाहिए, जरूरी नहीं है कि उनको एक और गुरु से दीक्षा लेने की जरूरत पड़े, लेकिन वो शिक्षा किसी और गुरु से ले सकते हैं। I'll give you an example that a friend of mine is a sannyasi, was initiated originally by Kirtananda, who fell down and left ISKCON and all that. And I think Hare Krishna also in Europe and so forth, they fell down and left ISKCON. So at least twice he had some bad luck. मैं एक ऐसे मित्र को जानता हूँ जो कि संन्यास आश्रम में है, लेकिन पहले उन्होंने कीर्तन महाराज से दीक्षा लिया, लेकिन उनका पतन हो गया, उन्होंने ISKCON को छोड़ दिया। फिर उसके बाद उन्होंने हरे कृष्ण महाराज से दीक्षा लिया और फिर उनका भी पतन हो गया, उन्होंने ISKCON को छोड़ दिया, लेकिन फिर भी वो आज ISKCON में है। Then he took shelter of Jayapataka Swami. और फिर उन्होंने फिर जयपताका महाराज का शरण लिया। As a Vaishnava gentleman, Jayapataka Swami asked him, "So what do you want to do?" और फिर एक वैष्णव होने के नाते जयपताका महाराज ने उनसे पूछा, आप क्या करना चाहते हैं? He left it up to the devotee was taking shelter of him, and he was asking him, so he wasn't dictating him what to do. He was saying, so what do you want to do? Do you want to take reinitiation, or you just want to take siksha? What do you want to do? और उन्होंने जयपताका महाराज ने उनको कुछ आदेश ना देकर उनसे पूछा कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या दोबारा दीक्षा लेना चाहते हैं या सिर्फ शिक्षा लेना चाहते हैं? So he's a sannyasi, so he had taken sannyas also from a fallen guru. क्योंकि वो सन्यासी थे, उन्होंने सन्यास आश्रम भी जो पतित गुरु हैं उन्हीं से स्वीकार किया था। So Maharaj very graciously left it up to him what he wanted to do. He didn't force him. Now you have to take reinitiation. Now he did not force him. और उन्होंने जब तक महाराज ने उनके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं की कि आपको दोबारा दीक्षा लेनी पड़ेगी, उन्हीं पे छोड़ दिया कि आप निर्णय कर सकते हैं, आप दोबारा दीक्षा चाहते हैं, सिर्फ शिक्षा ही लेना चाहते हैं। So he told Maharaj, I want to take first, second, and sannyas reinitiation from you. So he decided, I want full reinitiation from you, including sannyas. First, second, and sannyas. Huh? First, second, and sannyas. He said, I want to take first, second, and sannyas reinitiation from you. In other words, he completely rejected his previous connection. तो उन शिष्य का ही निर्णय था, उनका निजी निर्णय था कि उन्होंने कहा मैं सारी दीक्षा जो भी मैंने ली है, पहली, दूसरी और संन्यास दीक्षा, वो तीनों आपसे चाहिए। तो उन्होंने अपनी पुरानी दीक्षा को ठुकरा दिया। But as far as benefit goes, the fallen guru, he may get some benefit from his, in this case, chaste disciples. Because in this case, the disciples will be comparable to the chaste wife. तो ऐसा हो सकता है कि जो ऐसा कोई गुरु का पतन हो गया है, उनको भी अपने जो louder. ऐसा हो सकता है कि अगर किसी गुरु को पतन हो गया है, लेकिन उनको भी आध्यात्मिक फायदा मिल सकता है अपने गंभीर शिष्य की भक्ति और साधना के द्वारा। What was your third question? And third question you said was that Kamal Lochan Prabhuji had said that if the husband does good, the wife gets the benefit, but if the wife does something good, the husband does not get. But if the wife does something bad, the husband gets the bad part. If the wife performs sinful activity, is the husband going to get karma? That's the question?
आपका प्रश्न ये था ना कि अगर पति अच्छा करता है तो पत्नी को मिलता है और पत्नी अच्छा करती है तो पति को नहीं मिलता, अगर पत्नी बुरा करती है तो पति को उसका पाप मिलता है। मुझे दूसरा प्रश्न था। हाँ, तो आप ये कह रहे हो कि अगर पत्नी अच्छा करती है तो पति को नहीं मिलता है। Repeat the question in Hindi, please. गुरु को नहीं मिलना चाहिए। That's the question. So the question is, Maharaj, that he's saying that Kamalochan Prabhuji had said that if the husband does something good, the wife gets the share. But if the wife does something good, the husband does not get the share. So how come the Guru got the share? If we draw a parallel analogy, how could the Guru get the share from the disciples' devotional service? Well, did you translate already the question? तो प्रश्न ये था जो दूसरे प्रश्न से थोड़ा मेल खाता है कि ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कि अगर पति का जो भी अच्छा कार्य है उसका आधा फल पत्नी को मिल जाता है, लेकिन पत्नी का कोई आध्यात्मिक कार्य जो है उसका फल पति को नहीं मिलता। तो अगर आप इसी चीज से समझें तो गुरु का भक्ति का अंश तो शिष्य को मिलना चाहिए, लेकिन शिष्य का भक्ति का अंश जो है गुरु को नहीं मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप कह रहे हैं कि मिला, तो कैसे समझे इस बात? So there are Desha-kala Patra considerations to this question. Is the Guru going to get benefit by the devotional service of the disciples if the Guru falls down? This is the question, is it? Yes. So the point is that Desha-kala Patra, because in this example, because in one sense the disciples are Prakriti, they're subordinate. Like the wife is in traditionally. जो है वो देखना परिस्थितियां देखनी पड़ती हैं। इस दृष्टिकोण में देखें कि जो शिष्य हैं वो प्रकृति के समान हैं। So if they are fixed in Krishna consciousness, another example would be if a father deviates from religious principles, but a son is very fixed in pure Krishna consciousness, then certainly the father is going to get benefit. In fact, 11 generations, or is it 14? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, एक और उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे अगर पिता है, तो अगर पिता जो है वो कृष्ण भावनामृत में पक्का नहीं है, उसका पतन Actually, I think it's 14 generations. वो कृष्ण भक्ति में दृढ़ हो, तो पिता का उद्धार होता है। हमारे शास्त्र में लिखा है कि 11 पीढ़ियों का उद्धार होता है। 14 generations, I think it's 14. They get the benefit of devotional service performed by by sons or even daughters. तो उनको अपने बेटा या बेटिया का भी भक्ति का श्रेय मिलता है। We should not be kripa. हमें कृपा नहीं होना चाहिए। We should not undervalue the power of devotional service. हमें भक्ति की शक्ति को कम नहीं समझना चाहिए। So whatever good activities are performed by the disciples, the Guru may get benefit. If Krishna doesn't want him to get a benefit, then he won't. I mean, it's discretionary on the part of the Supreme Personality of Godhead. It's not a hard and fast rule necessarily. It's going to ultimately be Krishna's decision. और इस दृष्टिकोण से देखें तो गुरु को भी निश्चित रूप से उसका फल मिलेगा अगर शिष्य की भक्ति का, क्योंकि अल्टीमेटली जो है ये निर्णय कृष्ण का है, तो कृष्ण चाहें तो निश्चित रूप से दे सकते हैं। So we'll stop there. Jagat Guru Sri Prabhupada ki jai. Granthada Shima Bhagavatam ki jai. Sri Prabhupada ki jai. Nita Gopamanandi Hari Hari Bolo. Bhakti Madhurya Govind Swami Maharaj ki jai.